a lung of Mumbai having organ failure? सायरन बंद कर ली. अब क्या करोगे? पूर्ण कापून वगैरे आता यांनी पूर्ण फ्लोर बनवले. आता 2 फ्लोर रेडी आहे. पूरा विला बैठ जाएगा और साथ में 2-4 विला और लेके जाएगा तो नई बात नहीं है. अभी फोन पे तो बात हुई ना आपकी? हाँ, डायरेक्टर से बात हुई. मैं बोल तो रहा हूँ. बताइए नाम कौन है? डायरेक्टर का नाम नहीं पता मुझे. यहाँ का पूरा एरिया BMC द्वारा तोड़ दिया गया है. Aarey is getting stabbed with encroachments of various patterns, be it pretentious Bollywood celebrities saving Aarey from the metro shed or the forest fire or any other patterns of encroachment that are linked to Bollywood. Our criminological predictive analysis suggests that the burnt forest area on which the film studios have been constructed are likely to give rise to gang wars. Let's take an account of all the circumstantial and physical evidence that we have. रॉयल पम्प्स होटल के इधर है ना, एक बार आग जला रहा तो हम लोग सोचा मैं सब ऐसे गलती हो गया तो जल गया ऐसा. थोड़ी दिन के बाद में ना उधर एक फ्लोर बन गया. ठीक है, उनका थोड़ा कुछ रहेगा करके होटल का कुछ काम रहेगा करके सोचा. फिर बाद में उधर शूटिंग चालू हो गया. फिर ऐसे 1-2 साल के बाद नीचे उसको पम्प्स होटल के नीचे उधर भी आग लगे. मतलब इन लोगों ने प्लान किया मैडम, झाड़ भीड़ काटेगा तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होएगा, केस होएगा करके इन लोगों को प्लान करके ये जंगल जला के तो 1 साल के बाद उधर अनलीगल का फ्लोर बांध के उधर पुलिस पे छोड़. अभी फोन पे तो बात हुई ना आपकी? हाँ, डायरेक्टर से बात हुई. मैं बोल तो रहा हूँ. बताइए नाम कौन है? डायरेक्टर का नाम नहीं पता मुझे. नाम बता दीजिए. नाम नहीं पता है. देखो आपके फोन पे सेव्ड है ना, नाम बता दीजिए कि किसने. ट्रेनिंग कर रहे हैं. व्हाट इज योर आइडेंटिटी? इश्तियाक खान करके एक है और रॉयल पम्प में काम करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं रॉयल पम्प में और वो कब्जा करने का काम भी करता है रॉयल पम्प में. One of our previous reports had already shown how the founder of Royal Palms, Mr. Amir Nancy, had filed his own complaint to the authorities in which he had mentioned about demolishing choreographer turned director Ahmed Khan and his illegal construction. Ignoring his complaint has led to a gang war-like situation inside Royal Palms since the war among Bollywood biggies is shaping itself. As per sources, the diamond merchant Bharat Shah, who was previously booked for allegedly using Dawood Ibrahim's money in the movie of Salman Khan, has his land in Royal Palms itself. His land has been claimed by multiple people and few gangs have also constructed illegal housing exactly opposite to his property, which is called Charandev Pada as per the local sources. However, it has also been mentioned that other gangs filed various complaints and forced the BMC to demolish the same. Currently, there are major indications of underworld spreading its wings inside Bollywood through this film industry, while Maharashtra and Uttar Pradesh indirectly fighting over wanting to have film city in their respective states. डायरेक्टर का नाम क्या है? नाम नहीं पता. तो नहीं पता तो फिर यहाँ पे किसके बेसिस पे आए हो? उनके ऑर्डर पे. तो बताइए ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर दिखाइए. रिटर्न ऑर्डर दिखाइए. किस लिए? ये रोड, ये आप यहाँ पे हो, ये रोड टूटी हुई है. हाँ, तो ये क्यों टूटी हुई है? क्योंकि अहमद खान का इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिरा था, राइट? और छोटा मोटा जो कब्जा करता है वो अख्तर अंसारी करता है और जो बड़ा कब्जा करता है वो इश्तियाक करता है और उसका काम और विला और रॉयल पम्प होटल के इधर से ही काम चालू है उसका. वो साइड से ये जो जला हुआ है वो इधर ही जला हुआ है, वही जलाया करके हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है. ये एक बहुत बड़ा एरिया, यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बहुत बड़ा एरिया है 169, जिस 169 के पट्टे में चरणदेव पाड़ा भी आता है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध झोपड़ों के निर्माण का वीडियो निकालने गए शख्स को धमकी दे रहे इस प्यादे को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? यह खुद अपने आप में सारी साजिश को बयान करने के लिए काफी है. जिन मोहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके चेहरे भी हम आपके सामने लाए देते हैं. रॉयल पम्प के अंदर छोटा मोटा कब्जा भी लोग करते हैं, जगह कब्जा करते हैं, उसमें घर बांधते हैं, घर बांध के और ये लोग बेचते हैं.
अभी 2 लाख में घर बांधते, छोटा छोटा घर बांधते, झाड़ वेट काट के ऐसे जंगल में घर बांधते हैं, घर बांध के लोग 10-12 लाख में बेच देते हैं। वो भी लोग काम करते हैं ऐसा। फिर वो रॉयल पम्प में जो भी जगह छोटा मोटा जगह जला के लोग उसमें बंगला बांधते हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं। बोलते फिर फंस गया तो रॉयल पम्प के अंडर काम करते, फंस गया तो ट्रस्ट का नाम पे लेते हैं, मैं ट्रस्ट चला रहा हूँ वैसा। फिर बाद में बोलते मैं रॉयल पम्प के अंडर काम कर रहा हूँ, ऐसा भी बोलते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं और ये पूरा मकान और यहाँ का पूरा एरिया बीएमसी द्वारा तोड़ दिया गया है। Just like Film City has faced a major problem of daylight murders of contractors, Royal Palms could also face a similar issue along with illegal activities conducted by these contractors. रमजान के महीने में झूठू बोल रहा है, तो वो तो कर ही रहे हो, वो तो कर ही रहे हो तुम। हिंदू मुस्लिम करना है। Yes, you are directly targeting a Hindu family out here. You have directly targeted a Hindu family here. All the illegal activity of Ahmed Khan, Faridi, you being Ishtiaq and whoever being he, you have targeted only a Hindu family. Officer who granted the Fire Brigade NOC to the studio, which is built on the ashes of forest fire, says that wood and metal are the same and that his NOC is correct. He further confirms that the NOC renewal for the studio that is due in 2 weeks would also be granted. Now I am wondering if I need to go back to school or Mr. C.V. Bhosle, and that is something I would like for the viewers to decide after listening to this call recording. The forest fire in Royal Palm, and you had mentioned that you had mentioned to them along with your senior that within a day or two you'll submit the final report. And I was being told that yesterday you had already visited Royal Palm as well to check, which is basically the NOC was been sanctioned about tarpaulin and bamboos, but obviously here it is not tarpaulin, bamboo. Where bamboo is written here? Sorry, on the subject itself. No, there's no what this bamboo. The subject it's itself a wooden says plank, I suppose. Yeah, wooden plank or bamboo. I mean, it can be wooden Bamboo planks. is different thing. A plank is different thing. Sure, but it is wood. That is very much clearly mentioned in it, right? Of course, yes. So, but obviously that is not the case at the location. I'm assuming that you have visited, so you've already seen it. Yes. So, what is the action? Because they have their renewal in the next 2 weeks. Yes, they will get the renewal also. They will get the renewal even after having the steel structure. Of course, it's a temporary structure, no? Measurements and the structure is for a tarpaulin and a wooden board, which is a temporary structure which is made for the sets. There's a difference between sets and studio. This is a studio which has a strong foundation been created for the steel structures to stand on. Achha. So how do you define, I mean, what's the difference between steel and wooden board? I mean, I don't understand how are you defining, so that's why I just called to understand how are you defining wooden boards and steel. See, first of all, we are giving this NOC to the temporary structure what they are building. Temporary structure made of tarpaulin, wooden board and POP, but that is not the case out here. And you're saying that it is the same thing and they will get a renewal as well. So how do you define steel and wood as the same? Steel and wood, how you can say I'm defining it same? But you're mentioning that it is, it's the same thing which is there. The discussion evidently proves that the illegal structure of metal and structural steel has been there for the past 6 months, and now an inquiry has been initiated based on the complaints of Malyan and Ranjit. If a temporary shed of tarpaulin, wood planks and POP is the same as metal sheets, rods and other steel structure. Bollywood is quiet this time because it's a case of them, by them and for them.